हेलो एंड वेलकम टू पीजी रिएक्ट्स। तो आज के एपिसोड में हम रिएक्ट करने वाले हैं रामायणा द लास्ट बैटल, द फाइनल बैटल बाय ACK। उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओरिजिनल वीडियो को अपलोड देना मत भूलना। एंड लेट्स जंप राइट इनटू इट। अमर चित्र कथा, आई थिंक ये वाला थोड़ा स्पेशल होने वाला है। चल। The battle had raged on for many moons. The Vanar Sena had made many advances against the mighty Ravan's Rakshas army. Hundreds and thousands lay dead on the killing fields. Our journey today begins towards the end of the war. Lakshman returned to Ram, having successfully defeated Indrajit, the son of Ravan. Ram was pleased. He congratulated Lakshman, saying, "Now that you have taken away his right hand, Ravan will come to do battle." Meanwhile, Ravan was furious upon learning about the death of his son. Such was his anger that even the Rakshasas were terrified. In his fury, Ravan decided to kill Sita first. But before he could strike Sita, Suparshva, an intelligent and trusted minister, calmly counseled Ravan, "O valiant king, vent your wrath at Ram alone. Prepare for battle." So upon Ravan's orders, the Rakshas army set out to kill Ram. The battle between the Rakshas army and the Vanar Sena raged all night until at last Ram stepped out. In less than 2 hours, he defeated the entire army. A vicious army, lest you forget, that was capable of changing their form at will and causing absolute havoc on the battlefield. Inside the city, the Rakshasas mourned their dead. Ravan dressed for battle and vowed to wipe away all their tears. Ravan left the city accompanied by 1 lakh chariots, 3 lakh elephants, 6 crore horses, and what felt like infinite foot soldiers. I thought कि उसके Across चार the दांत हैं। battlefield, Ram and Ravan spotted each other. Evil omens started appearing over and behind Ravan, signifying his impending doom. The skies opened up in a rain of blood. Vultures hovered over his head, and howling jackals appeared behind him. Narration is just epic. In spite of all the ill omens around, Ravan moved forward. He viciously attacked the Vanars with his gold-decked arrows. Using a powerful missile designed by Brahma, Ravan began to consume the Vanar army. This brought out Ram and Lakshman, who stood firmly in front of Ravan's oncoming chariot. In the fierce conflict that followed, the two used the Rudrastra, the Agniastra, and other powerful missiles. Suddenly, Ravan spotted his brother, Vibhishan, fighting on the side of Ram. He quickly jumped off his chariot. He flung a javelin at his brother, but Lakshman stopped him. Ravan was furious at not being able to take his vengeance. "As you have saved his life, this javelin will now take yours!" The javelin pierced Lakshman, knocking him to the ground. Ram, seeing Lakshman fallen, attacked Ravan with such ferocity that Ravan took to his heels in terror. Lakshman was injured, but his face was bright and his heart was beating. The only cure to Lakshman's state was the Sanjeevani herb that could only be found in the Mahodaya mountains, far, far away. Hanuman, ever ready to take on the most difficult tasks, volunteered to fetch them. Once there, however, Hanuman could not identify the right herb. So instead of a few twigs, Hanuman returned with the entire peak of the Oshadi mountain. The wise old Sushena crushed the herbs and returned Lakshman from the jaws of death. Ravan returned to the battlefield on another chariot. As Ram pushed back, the Devas were perturbed. Indra worried, "Ram is fighting on foot. Please take my chariot and offer it to Ram." Along with the chariot, Indra also gave Ram his mighty bow, arrows, spear, and armor. And thus began a thrilling battle between Ram and Ravan. And for hours the two battled on, until Ravan's charioteer saw that the king was exhausted. He quickly turned the chariot away in an attempt to give Ravan and his horses just a little bit of respite. But Ravan was furious. He commanded his charioteer to take him back to the battlefield at once. With the chariot returned to the battlefield, the two great warriors faced off once again. There had never been such a terrible battle. It raged on for 7 days and 7 nights without pause.
Ram and Ravan fought fiercely, using all their battle skills against each other. The gods watched on anxiously, and after all that time, at last, Ram beheaded Ravan. But much to his shock, Ravan's head grew back on. Arrow after arrow, Ravan seemed to have an inexhaustible supply of heads. Ram was confused. It was then that Matali, Indra's charioteer, spoke. The hour of Ravan's doom has arrived. It is time to charge the Brahmastra. Ram remembered the mighty arrow given to him. पर तो विभीषण An का arrow रोल था। that never missed its mark. Brahma had made this arrow for Indra. It had the wind for feathers, fire for its head, ether for its shaft, and Mount Mandara itself for its weight. The arrow was inescapable. It flew from Ram's bow and pierced Ravan's heart, and Ravan fell. The Vanars leaped forward. Ravan is dead! Victory to Ram! The universe rejoiced. But Vibhishan was filled with sorrow at the death of his brother. Ravan's wives were all overcome with grief. Seeing this, Ram insisted that Vibhishan organize a grand funeral for Ravan. Taking Ram's advice to heart, the preparations were made. And so Lanka bid a tearful farewell to Ravan, king of the Rakshasas, and preparations began for Ram's triumphant return to Ayodhya, a day marked to this day with celebrations across the country. ऐसा ही माहौल Day of फिर Diwali. से देखने को मिलेगा कि मजा आ जाएगा। This story is just a chapter from our 6-part series on the Ramayana. Okay. Log on to amarchitrakatha.com to celebrate this Diwali with the Ramayana. भाई साहब, अमर चित्रकथा एज ऑलवेज, बाप रे बाप, एपिक था भाई ये। ठीक है, जो कुछ भी था। नरेशन, सबसे पहली बात, नरेशन कुछ अलग ही लेवल पर था, जिसकी वजह से जो मजा आया है ना, मतलब क्या ही बताए। ओके, तो कुछ चीजें जैसे मुझे पता नहीं थी कि इंद्रजीत का वध होने के बाद जब रावण को ये बात पता चलती है तो वो माता सीता को मारने के लिए जाते हैं। ये इंसिडेंट मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। आई डोंट नो क्यों, पता नहीं यार, मुझे मतलब ये इंसिडेंट के बारे में मुझे कुछ खबर नहीं थी। जब इस वीडियो में मैंने देखा तभी मुझे पता चला। आई डोंट नो ये असली है कि एक्चुअली आई कैन ट्रस्ट अमर चित्रकथा, राइट? ना, नॉट, क्योंकि ये एक वेल नोन फैक्ट है। जब श्री राम जी रावण को मारते हैं गले के ऊपर, तो गले फिर से उगते जाते हैं। वाह, व्हाट अ लैंग्वेज, में काफी विचित्र शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। जब श्री राम अपने बालों से रावण को मारते हैं तो वो सर कटते जाते हैं, फिर से उगते जाते हैं। तो विभीषण उन्हें बताता है कि सर पे मत मारिए, रावण की जो जान है वो नाभि में है। ठीक है, अगर मारना है तो तीर वहां पर मारिए, तभी जाकर वो मरेंगे। ठीक है, जब ब्रह्मास्त्र नाभि में मारा गया तब वो मरे थे। एंड यहाँ पर सीधा बता दिया कि भाई जो इंद्र के रथ के जो चालक थे उन्होंने बताया था कि अभी वक्त है ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करने का। एंड ये बताने की वजह से जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था कि भाई विभीषण जो रावण के भाई थे उन्होंने ही उन्हें मारने का तरीका बताया, नाभि में मारने का। वो जो रावण का जीव होता है वो नाभि में था उनके। तो ये जो स्टोरी थी, ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था, गायब। आई डोंट नो, ये काफी प्रचलित फैक्ट है भाई। पूरे मतलब हिंदुस्तान में तुम किसी को भी पूछोगे तो वो वही कहानी बताएगा जो मैंने अभी तुम्हें बताई। एंड मुझे नहीं पता कि आखिर में इसके साथ ऐसी छेड़छाड़ क्यों करी गई, गॉड नोज। ठीक है, दैट्स व्हाई आई कांट ट्रस्ट अमर चित्रकथा। तो हाँ, वही बात है। एंड अगर बाकी की वीडियो की बात की जाए तो भाई साहब, नरेशन टॉप नॉच, नरेशन काफी अच्छा लगा। मैंने पहली बार इंग्लिश नरेशन सुना है अमर चित्रकथा का। इससे पहले मैंने जो कुछ भी देखे थे वो हिंदी थे। इस बार पहली बार इंग्लिश नरेशन का एक्सपीरियंस था एंड काफी सही, मजा आ गया देख के। रामायण तो एपिक है ही, नरेशन तो एपिक था ही। आखिर में जो अयोध्या का सीन दिखाया गया वो काफी अच्छा लगा। एंड कुछ सालों बाद वैसा ही सीन तुम्हें फिर से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सो कीप पेशेंस, मजा आ जाएगा। एंड आई थिंक ये दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही। मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, बट ना 30 days 30 अपलोड का जो मेरा टारगेट है वो किसी भी हाल में इस महीने में कंप्लीट होकर रहेगा। वेट एंड वॉच, और क्या कर सकते।
बाकी जिम्मेदारी मेरी, तुम देखते रहो। और क्या ही बताएं, बोलो जय श्री राम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना एक बार। बोलो मेरे साथ जय श्री राम एंड गुड बाय।